Thank you. So let's begin the session. Today's session. This will be the part 2 of the Act and Policies. And here we will start like coastal regulation zone. I was also talking yesterday. The coastal regulation zone. In short, I will obviously go through the slide, but in short, I am talking here that how much 500 meter from the high tide line, the coastal regulation zone, that means to control, to regulate. Here, what exactly meaning is that regulation. What is regulation? Not ban. Not ban. I am talking about not banned. एमती ना कि इथरे बैंड करा दी दिस इज रेगुलेशन जोन दैट मींस क्वेश्चन अराइजेस के व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशन see when it's a regulation coastal regulation zone regulate that zone how much coastal zone कहिছে ना that means 7561 hope I am not wrong 7561 kilometer long coastal line of India, including the islands. So we have to govern that area. Then why to govern that area? Now the question arises, why to govern that area? Because of eco-sensitive zone. Because of what? Eco-sensitive zone. So again I am coming to the point is that कि आगे at least हम overall पढ़ी थवा है ना slide तो बहुत बड़ा अच्छी देखिए no doubt. So एक मिनट हजबंड को वेरी गुड इवनिंग हम क्लास रही ना ना तो ये ऑनलाइन क्लास कहीं भी करी परिबे एटा हां किसे नहीं ना 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 डोंट वरी एटा हो सो सॉरी फॉर डिस्टर्ब So coastal regulation zone, that means हमें कोई zone को regulate करवा 7561 kilometer of the long 61 or 16 like that. Okay, long coastal line we will regulate. That means regulate कहीं करियो because of the eco sensitive zone. ध्यान से मन रखो इटा होची eco sensitive zone. So being eco sensitive zone, that means eco sensitive zone हमें कहाँ को कहिबा. Let's say this one is your coastal line, long coastal line, including Andaman Nicobar and Lakshadweep. These all are having what coastal zone. ताले ये zone को regulate करिवा. केते 500 meter zone को regulate करिवा. कोठू low tide zone. That is what low tide line to high tide line. ये जो भीतर एरिया टा जोटा कि 500 meter that we will control. But मुकली yesterday discuss करती कि if the region is having 1000 more than 2161 population or like that जदि हमें density देखिबा जोठी हमरो 2100 through more or let's say 2100 something population the density अधिक रहइबो तले से पर्टिकुलर जगह रे 300 मीटर हमें रेगुलेशन करिबा आइलैंड केते आइलैंड would be like 20 meters आइलैंड पाखरे केते मीटर कंट्रोल होबो 20 meters तले 500 कोठी कंट्रोल करबा ऑन एन एवरेज 500 बट 500 जोटा हमर ये मेन कोस्टल लाइन रे 500 मीटर मेन कोस्टल लाइन रो जोठी पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक जेंति गोवा कोस्ट हे गेला जेंति पूरी हे गेला लेट्स से हमें दीघा हे गेला एठी पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी वुड बी मोर देन 2100 तो एई जगह रे 500 जगह रे केते करियो हमें 300 को कंट्रोल करियो तुमको सर एचा कैंपे एमती हमको डिस्क्रिमिनेशन other region are control up to 500 meter but कोटी जगह रे 300 meter काहे कोचे because to promote the tourism सालिस नाइक कमिटी कथा yesterday discuss करथिले tourism को promotion करिया पे जोठी density population अधिक जेमते गोवा हे गेला पुडुचेरी हे गेला कि लेट्स से हम पूरी कथा नै जो एठी obviously population संख्या अधिक तेनु जदी हमें 500 अप्लाई करिवा तले जते कि बिल्डिंग्स अछि पूरी रे जते होटल्स अछि दे विल बी इलीगल हे जो सब को पकेया पड़िबा हमको है ना तो दैट मींस एटा गोटे बहुत हमें कहबा ह्यूज कॉस्ट इफेक्टिव हे जो तेनु करी ताको हम एग्जाम्पशन देकी 300 मीटर कर दो सो दैट what hotel industry tourism industry that will promote in that particular region आइलैंड्स पाखरे हमें 20 मीटर्स कंट्रोल करिवा कना आइलैंड रो कोस्टल लाइन बहुत नैरो थाए सो 20 मीटर्स को हमें रेगुलेट करिवा सो लेट्स सी अ कोस्टल रेगुलेशन जोन 7000 किलोमीटर लॉन्ग जोटा मु कहले 7500 समथिंग है ना among the countries India rank होची कोन इन द वर्ल्ड रे होची 20 जाउ मन को कोस्टल लाइन होची तो हमको कोन करियो प्रोटेक्ट करियो काहे कि कोस्टल जोन रेगुलेशन के बसला फर्स्ट टाइम 1991 बट सेतेबेले ये कोन हेतला इट वाज लाइक एडवाइजरी वन टाइप ऑफ एडवाइजरी थिला
ताले को केते एरिया को हमें कंट्रोल करिया मु कहतले 500 मीटर कहा का भितर हाई टाइड एंड लो टाइड लाइन 500 मीटर को हमें को रेगुलेशन करिवार अछि एटा कोन बैंड नो रेगुलेशन किए करिवो ताले पावर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहा अनुसार करा जिवो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सो दैट मींस ए जो 500 मीटर को हमें रेगुलेट करिबा ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी हमें डिस्कस कर देथले 1986 दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सो ऑन द बेसिस ऑफ that act we will control 500 meter of the coastal zone between the high tide and low tide zone को हमें कंट्रोल करवा because of the eco sensitive area है ना तो हाई टाइड लो टाइड ऑलरेडी समझते जानिछ जेमति कि लेट्स से गोटे कोस्टल लाइन जो जे जुआर उठी के असला ताको कहले हाई टाइड छाड़ी की जाय जेतोल जाको कोचे एफ और भटा टाइम रे पानी जो उठी थाय दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड सो दैट रीजन तो स्प्रिंग टाइड को हमें नहीं जवा मतलब जेतोल स्प्रिंग टाइड तो समझते जानिछ तो ऑब्वियसली स्प्रिंग टाइड रे कोन आसीबो हाई टाइड स्प्रिंग टाइड मतलब हाईएस्ट टाइड आई वुड से स्प्रिंग टाइड्स इक्वल टू हाईएस्ट टाइड ना एबे हमें देखबा that 500 meter which we will regulate that is divided into how many zones into 4 zones zone 1 zone 2 3 and 4 now see but exactly that would not be so this would be the 3 zone 4 is not coming under this 500 meter again I repeat background noise is coming so actually the park is close to my room so some sort of background noise is coming so evening and Dasara is going on so actually तो आज ये पिलाने आसिक खेलुछंती तो टिके नॉइज आस्तो so you have to bear with me चाबियो so 3 zones that means ये जो हमें तीनटा जोन देखबा these zones are what 500 मीटर ये जो हमारा 500 मीटर अछि ताको हमें डिवाइड करछे तीनटा जोन रे जोन 4 इज नॉट कमिंग अंडर दिस जोन दैट इज द 500 मीटर भीतर आसु नहीं दिस वन इज अप टू लो टाइड जोन टू 1200 नॉटिकल माइल्स जदी लेट्स से आई एम पुटिंग यू मैप तो मैप नहीं ठीक अछि मु एपटे मैप ड्रा करके देखि दउची लेट्स से कि भाबो इठा होची तुम्हारा कोस्टल लाइन दिस वन इज द कोस्टल लाइन and here is from the this one is high tide line just imagine kar this one is high tide line so exactly again I draw this would with the red line the red one is the high tide line and this one is the low tide line high tide line तो ए मझी रे केते हो 500 मीटर को हमें कोन करिबा कंट्रोल करिबा बट लो टाइड थु जदि हमें 12 नॉटिकल माइल जहा को हमें कहूचे कोन दैट इज द टेरिटोरियल वाटर है ना तो अप टू दिस टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल that would be zone 4 ताको हमें कहबा zone कोन 4 that means zone 4 is completely water body और आई वुड से जदी बे बंगाल को थाको हमें नबा जो बीच रे हमें जाकी पूरी बीच रे जतरो हमें से पानी पकरे टच करू जे सेठी जो मतलब जहां भी हमें वी आर हैविंग फन ओवर देयर so from there up to 12 nautical miles towards the water that zone is coming under the zone 4 that means completely water part so ये zone रे कोन आसबो corals आसीबो shallow water these are the things sand dunes वगैरह sand dunes तो आसीबो नै थरे corals basically I would say the corals they will come in this particular zone तापरे जो तीनटा जोन रहला जोन 1 जोन 2 जोन 3 ये आसीबो हमरो 500 मीटर रे कंट्रोल रे आसीबो तो पूरा बेसी मतलब बेसी भी डिफिकल्ट नहीं बहुत इजीली बुझाउची तो एबे जदी हम देखिबा लेट्स से तमे इमेजिन करे यू आर इन द पूरी बीच माने जोठी पानी अछि एंड फ्रॉम देयर यू आर मूविंग टुवर्ड्स द व्हाट मेराइन ड्राइव जो रोड अछि मेराइन ड्राइव साइड को मूव करूचंती तो फर्स्ट जोन कोन अछि जोठी वाटर अछि दैट इज द जोन 1 अगेन आई रिपीट दैट इज स्वाम्पी जोन दैट वुड बी व्हाट स्वाम्पी जोन सेठी पानी सबले बाली ओदा रहउची पानी रहउची दैट इज द स्वाम्पी जोठी हमें पानी पकरे that is swampy zone so zone 1 from that जो sand होची जो sand रे हमें चाली की जाउचे रोड को आसुचे that would be zone 3 then आसबो जोठी हमर रोड वगैरह होची होटल वगैरह that is the zone 2 बस एमिति इमेजिन करके रखि थाओ ना zone 3 means जो sand जो बाली रे हमें चाली जाउचे तापर बीच पडुचे सेतर बहुत सारा छोट छोट दुकान वगैरह होची so that would be zone 3 त zone 3 रे देखिबो no construction zone that is what no construction zone but having exceptional कोन ना देयर जेमती टॉयलेट पे बिल्डिंग हे परिबो वाटर पाइपलाइन हे परिबो मतलब
washroom हेई परिबो, गाधे पे हेई परिबो, पानी टांकी रही परिबो. These things are exempted, but here no construction, other kind of construction हेई परिबोनी, only rural zone आपको कहा. So zone 3 would be called as the rural zone. जदि तुमको पचारो ये zone भितर कोटा rural zone कोटा urban zone, so obviously zone 2 is urban. Zone 2 is urban. Here it also written here like, and this is rural. This is rural. कहले जो आमे रोड रो आमे चाली चाली जाउछे सेठी कोन से बाली ऊपर छोट छोट दुकान वगैरह करछंती, कारण सेठी परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउ नहीं, except that is the infrastructure related to the sanitation and all these things. So that would be the zone 3. So that will comes under the zone 3. Just a minute. Video off कर दियंतु. So zone 3, so I was talking about zone 3. So zone 3 is a rural zone. That means in the coastal regulation zone, as I was talking about, the zone 3 is the rural zone where no construction. That means the buildings are not allowed. But yes, having exceptional is that you can have the toilet, you can have the washing room, you can have the water pipeline over there, because these are the what sanitary sanitation for the sanitation purposes you can have, so that कौन होगा tourism को हमें boost करी परिवा. So that what we will promote the tourism in this particular region. Is it fine everyone? So that zone is 2 to 500 meter हमको देखिवा जहाँ भी हो. So zone 2, that means the urban area, जो हमारा marine drive होची and built up area. This is what I would say built up area. Built up area means what? The area is already built up. That means the housing, hotels, restaurants, they have already captured this region. That is the zone 2. And zone 1 already ମୁଁ कहि देछि जोटा कि इको सेंसिटिव, जोठी हमें पानी पाखरे जाई के मतलब टच करूचे वाटर को, and where that particular zone, that swampy zone would be zone 1. And zone 4 is what? एक मिनट, what screen is coming to all everyone? It's fine to all screen? Okay, thank you. Sorry. So that would be the zone 4. Zone 4, that means let's say the question केमिति आसे हमें देखिबा. What kind of question they ask from this particular zone? हमको पचारो सबुठु eco sensitive zone की zone 1. So zone 1 is eco sensitive zone. So obviously the zone 1 is going to the eco sensitive zone. So this one is eco sensitive zone. Now zone 1 रे कौन कौन आसे? Mangrove आसीबो. Obviously this eco sensitive zone रे कौन आसीबो तमरो? Here it will have what? But corals. एथरे तुमको corals आसी पारे. Here would be your mangrove. एथरे mangrove आसीबो. Again it would be zone 4 रे mangrove. Zone 4 also will have your what? Mangrove तो आसीबो नहीं, एटा तो पूरा completely water part. So एथरे हमको corals आसीबो. Here would be the corals. Zone 4 will have also corals. So zone 4 हमें देखिए, that is all about the zone 1 to 4, 3, 4. Importance. Now importance एथे पई, because this is critical zone. So protection of ecological sensitive. जदि let's say तमको बेट सर के पे असला इको, that means हमें देखिबा coastal regulation zone amendment हेची हमरो 2018 itself, पुनी 2011 रे थरे हिथिला, तापर 2018 रे हला साइलेंस नाइक कमिटी रे कहिथिलि मु. तो आकु हमें कोन करबा, that means जो CBD अछि तमरो हाना CBD को जदि हम देखिबा, that is what Convention on the Biological Diversity, or we are also having Biodiversity Act 2002. So that means जेतेबेले हमरो Biodiversity Act अछि 2002, we need to protect the biodiversity of this country. So ecological, that is the like coastal area also having biodiversity. So that means आपको गोटे ecotone भी हमें कहबा. So this is why. So this region also what very highly sensitive to the cyclones. Fishing community I mean defend करूछंती. So this is all about the हमें देखिबा टाइमलाइन देखि दियो केबे केबे आसला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. So that is why ये आसीछि है ना 2008 रे मतो केबे कहथली 18 रे हमको कोन नोटिफिकेशन आउथरे आसीछि साइलेंस नाइक कमिटी ये पचर करे कमिटी का आसुत आसीछि रेगुलेट करूछि ये क्वेश्चन भी आसी पारे ना. साइलेंस नाइक कमिटी एबे जोटा हमर 2018 रे जो रेकमेंड कले जाको अमेंड करा गला 2011 को, एथरे कोन गला जोटा चेंजेस आसीछि से चेंजेस मु ऑलरेडी कहि दैछि. ये देखो डेंसिटी जोटा मु कथा कहथली के जोठी डेंसिटी अधिक रहबो सेठी केते रहबो ना हमर 300 मीटर कंट्रोल करबा. आको हम डिवाइड कर देले जोन 3 को A and B. So that would be what only 200 meter. That means out of 500. अच्छा मु कहथली के जो शोर लाइन रे हमर that is
जदि आम देखा जो पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक अच्छी से ना दैट वुड बी 300 मीटर आम कंट्रोल करदे तेमती कर जो पॉपुलेशन कम थी बिलो 2161 पॉपुलेशन थी दैट रीजन विल कंटिन्यू टू हैव 200 मीटर 200 तुमको सर 200 कौन लिखाई 200 अर्थ जोटा कि जोन 1 2 3 को मिसेकी 500 जोन 3 इटसेल्फ 200 मीटर तक आम करदे बाकी आउरी 200 मीटर रही सॉरी 300 मीटर लेफ्ट रही ना तेणु करिकी एटा एक्जाक्टली 300 मीटर थिला जोन 3 टा 300 मीटर थाए ताको आमे कोन करले रिड्यूस करके 200 कर देले बस ये होची डिफरेंस कोन पई ना सो दैट जोन 3 को जेते आमे टिके कमी देबा तले जोन 2 रो एरिया को टिके स्पेस मिलिबो है ना तेणु करी जोन 1 को टिके वेटेज अधिक देला बिल्ट अप एरिया पई आ जोन 2 को आमे भाग कर देले एथि पई मुझे क्रिटिकली जाउची टिके मतलब भीतर को कि जोन 2 के एथि पे में डिवाइड करले जोटा रूरल थिला 300 मीटर टा रूरल थिला ताको ए बी रे कन्वर्ट कर देले सो दैट हमें हाफ ऑफ द एरिया रे एबे बिल्ड अप करि परिबा फॉर द बूस्टिंग ऑफ टूरिज्म से इथि पे एको कहै छै एठी लेखा भी है देखो टूरिज्म सेक्टर को डेवलपमेंट दवा पई करा जाय छै एबले फैसिलिटीज तो साइलेंस नाक कमिटी मन रखबो डेंसिटी अनुसार केमति रेगुलेट होची दिस इज ऑल अबाउट द कोस्टल रेगुलेशन जोन नाउ क्लियरेंस हु विल गिव यू द क्लियरेंस Ministry of Environment and Forest and Climate Change. Any kind of development. Acha, now question arises जो coastal regulation zone 1 eco sensitive zone no development and zone and सबू to highest protection enjoy करे coastal regulation zone part 1 or the part 1 that is the highly eco sensitive area जोटा में mangrove वगैरह आसबो corals आसुची से region whether we will have the gas pipeline ये किंबा harbor etc हे पारिबो they are given exempted solar power plant nuclear power plant ports this zone let's say I'm talking about in this particular zone 1 is highly eco sensitive but despite the fact here you can have ports कारण coast रही तो port करिबा ना नले करिबा केमते हमें port ही परिबा नले जेटी करि परिबा पाइपलाइन करि परिबा हमें wind fan करि परिबा nuclear power plant only these infrastructure can be what I would say सेटअप बाकी एमती ना कि कहा गोटे होटल वगैरह एमती कमर्शियल ये रे हमें दिया जबने ओनली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहबो प्लस क्लियरेंस दरकार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आ तांकठू दरकार आइलैंड रो केते कहितली मु तुमको आइलैंड रो केते जाय रहबो 20 मीटर्स कहितली आइलैंड रो केते रहबो आइलैंड रो जो हमर कोस्टल रेगुलेशन जोन रे 20 मीटर्स है ना बट ओवरऑल केते रहबो 500 मीटर रहबो है ना बस एति की काफी जो 50 मीटर्स किछि हमें देखिबा कि लार्जर आइलैंड पाखरे 50 मीटर्स रहबो स्मॉलर आइलैंड्स पाखरे 20 मीटर्स larger island pakare reba 50 meters so this is all about wetland ebe asiba me now we will come to the wetland conservation and management rule 2017 so now we will come to the next so ye thila amar coastal regulation zone ko ame pura discuss kar dele now we will come to the conservation and management of what wetland wetland कोन प्रथम कथा what is wetland कहले जोठी minimum at least केते रहबो 7 to 9 मीटर ऑफ वाटर ताठो अधिक हेइ नथिबो मिनिमम नो दिस इज मैक्सिमम आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम वाटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन तो वेटलैंड गोटे लेक हेइ पारे सिंपल वेटलैंड कहले संतोषतिया जगह जोठी वर्ष सारा पानी रहउची सिंपल सो पानी रो मैक्सिमम डेप्थ हेइ परिबो 9 मीटर ताठो अधिक हबो नाही है ना मैक्सिमम मिनिमम किछि भी हेइ पारे मिनिमम लेट्स से हम कहबा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वाटर थई पारे वर्ष सारा so that would be also wetland तो से भी गोटे wetland ही परिबो that means हमें ताको wetland कहि परिबा तो Ministry of Environment and Forest Climate Change has notified the new wetland convention that is what Conservation Management Rule 2017 to prohibit the range of activities in the wetland तो प्रथम कथा कि wetland conservation काहे करिबा because Ramsar Convention 1972 Ramsar Convention 1972 that came to force in 1972 1971 the convention was held in 1971 in the Ramsar city of Iran for the conservation of wetland of international significance है ना और समस्त मन थे 1981 Chilika was added as the first Ramsar site and that particular time सो मु कहते कि जल्दी ही जॉइन करो क्या जल्दी जॉइन कले कौन हम सो दैट इट वुड बी इजी फॉर मी जब यू ओके वेटलैंड
conservation and management. तो एथिरे हमें काहाकू कनेक्ट करियो obviously we will connect to the Ramsar Convention 1972 it came to force 1971 it was held in the Ramsar in the eastern Ramsar city or the eastern city of Iran Ramsar in 1972 and hope everybody also aware of the fact that 1981 Chile and Kela de Ghana National Park added into the or being the Ramsar first Ramsar site of India to be added into the Ramsar list. Then again it was also put into the list of the Montreux list in 1992. It was 1992 it was added to the Montreux list and 2002 it was out of the Montreux list, that is the Chilica. So Montreux list jodi ame dekhiba kono ye hoji gote that is what a book register, so that is gote register maintain kara jaye na se register e kaha ko add kara jaye is a register. Then which wetlands are added to that register? That means the wetland of endangered, they added to the Montreux list. Hope this one is also known to all. Okay, so that means हमें wetland रो definition कोन wetland रो समथिंग किसी मतलब एमपी clear cut definition कहीं कि हाँ this is the definition government has accepted. Simple any region that remains throughout the I would say year swampy. Throughout the year it will remain swampy, but water depth should not be more than 9 meter. Okay, now wetland could be your perpetual wetland like Chilica ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ରହୁଛି or seasonal. It could be a seasonal like the rice field. ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ଜମି ବର୍ଷ ସାରା ତ ପାଣି ରହୁନି, so that could be also termed as the wetland. ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ seasonal ଯଦି water ରହୁଛି that would be also termed as the wetland. So this is also you have to remember. जब भी हो ताले हमें ताको regulate करवा. Now why to regulate? Why to conserve and management of the core that is the what wetland? Because wetlands are very significant कोन पे because of the तुम जानते हो CO2 को कोन करिबो ऑब्जर्व करि परिबो, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करिबो, न्यूट्रिएंट रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट, देन हमको गुड्स एंड सर्विस दे आर ये प्रोवाइड करंती. तुम देखिबा फंक्शन फटाफट देखि दो दैट इज द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी. फंक्शन कोन करिवो आर फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट will also nominate one expert each in the field of wetland ecology, hydrology, fishery, landscape planning and socio-economic. फंक्शन टा कोन करिवो ये यार फंक्शन होची कि परमिटेड जो मतलब किछि भी एक्टिविटीज होची ताको रेगुलेट करिवा, ताको प्रोहिबिट करिवा, ताको कंट्रोल करिवा. तो ए सब एक्टिविटीज को जेमति कि लेट्स से इफ्लुएंस कौन से गोटे जेमति चिलिका को हमें सीवेज दबा इफ्लुएंस दबा तो पॉल्यूशन जेते होची ताको से प्रोहिबिट करिवो, से बेला इंडस्ट्रीज को नियर बाय रीजन ताको कोन करिवो प्रोहिबिट करिवो. वेटलैंड जोटा मु तुमको कहितली कि सॉरी इट्स बट 6 मीटर सॉरी मुझे के रेक्टिफाई कर दियो इट्स 9 मीटर मु कहितली बट इट्स 6 मीटर इट्स रिटन हियर सो करेक्ट मी. देन एथरे कोन हे परबो तमरो आर्टिफिशियल आसे परे किंबा नेचुरल हे परे जेमति गोटे आमे डैम कर दे लाइक द हीराकुद आमे केबा हीराकुद भी गोटे वेटलैंड तुमको सर केमिति पैडी फील्ड कथा मु एबे ही कहितली के गोटे पैडी फील्ड भी वेटलैंड हे परबो कारण सीजनल सेटा हे परबो. तो गोटे आर्टिफिशियल हे परबो नेचुरल हे परबो जेमति हीराकुद हे गेला किंबा जोब्रा बगैरह हे गेला इमान को भी हमें वेटलैंड कहि परिबा. तो वेटलैंड रो ये होची सेमति किछि क्लियर कट डेफिनेशन नाही. जदि हम देखो ओवरऑल 26 बहुत सारा वेटलैंड इंडिया रे अछि तो सेथर को मु जाउनी यार फंक्शन टा खाली मन रखो कोन कोन करे जेंति वाटर स्टोरेज करिवो, न्यूट्रिएंट रिसाइकल करिवो, फ्लड मिटिगेशन करिवो, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करिवो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करिवो, बस दैट इज ऑल अबाउट है ना. और चेंज इन पॉलिसी किसी दरकार नहीं. हां ये टिके इंपोर्टेंट अछि कि सॉल्ट पैन्स ना सॉल्ट पैन्स कहले कोन जोठी कोस्टल रीजन रे लुणा मारंती जो पानी जमा करके जो लुणा मारंती they have been omitted. Now आगे कौन करा salt pans were also treated as the wetland. Now they are removed from the that list. एबे ताको removed कर देइ छामी है ना. तणु करी कि जदि हमें wetland देखिबा salt pans are not coming in the wetland. तो से माने एबे wetland रो आसुनाते एटा टिके मन रखिबा कि whether salt pan is coming they are not coming. So एते पे हमर कोन that means wetland बहुत लूज करियो खास करी गुजरात कने गुजरात रे बहुत सारा salt pan अछि so they will lose very fast. Next we will come to the NGT National Green Tribunal. ना प्रथम कथा NGT के बेसला 2010 very simple question एमती भी OPSC पचारि छी आगो को कोन पे आसिला ना
एनजीटी रो जदि आमे कामो देखिबा ओनली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज को एनफोर्स करिवो अगेन आई रिपीट एनजीटी रो मेन फंक्शन होची एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जेमति कि तमरो वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट हेगला वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट हेगला एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट हेगला देन आमे कहबा forest policy forest conservation environmental protection act is jete rohila that would be coming under the NGT environmental related air pollution water pollution is सब आसीबो but wildlife protection act आसीबो नाही that would be like amaro normal judicial system रे ट्रायल करा जिवो काना that is criminal ना difference कोन तुमको सर सब environmental laws are coming under the NGT then why not wildlife protection act of India कारण जदि wildlife protection act अनुसार anybody kills any wildlife that is criminal activities तो सेटा क्रिमिनल एक्टिविटीज और जदि क्रिमिनल एक्टिविटीज ताकू कोन करा जो सिविल रे ताकू कोन करबा हमर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अछि सेथरे ताकू हमको नै जवा जंतु हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज हेगला हाई कोर्ट हेला सुप्रीम कोर्ट एथरे आसीबो जेहेतु एयर पोल्यूशन ये सब हमर कोन क्रिमिनल रे जाउनी तेनु करके आपको एनजीटी ही कवर करिवो होप दिस डिफरेंस विल बी एनफ ना तो तेणु करके एनजीटी रे कोन आसीबो नाही जेमति तमरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1960 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट एंड 1970 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आसीबो नाही ओके डन एवरीवन तो ये सब तमरो आसी था एनजीटी काहे करागला ग्रीन ट्राइब्यूनल देन व्हाई बिकॉज़ टू व्हाट आई वुड से टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द हाई कोर्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द district court eman ko upare bahut sara they are also having pending so much of pending of cases again environmental related cases jodi jiba start he high court supreme court district court ko so that would be very difficult to discharge the cases because they are also not having that much of expertise that related to the environment so we are having so government thought it would be better to reduce the pressure from the courts that is the high court supreme court district courts and to have the expertise body एनजीटी गोटे हम कहते जो उथरे कि जो जजेस मान रहे दे विल हैव नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंटल एक्ट्स वगैरह जा अछि तनु करके एटा कोन फास्ट हम कहबा जुडिशियल प्रोसीजरटा फास्ट रहइबो डिलीवरी ऑफ द जजमेंट वुड बी फास्ट एंड दैट वुड बी आल्सो गुड गवर्नेंस भी हम ताको कहि परबा दैट वुड आल्सो गुड गवर्नेंस काना जस्टिस डिलीवरी इज इक्वल टू जस्टिस डिनाय तनु करके एटा कोन फास्ट प्रोसेस हे पर इट वुड बी फास्ट जजमेंट हे परिबो आ बर्डन भी कमी जिवो एक्सपर्टाइज भी रहइबो एंड गुड जजमेंट हे परिबो तो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंडिया इज द थर्ड नेशन टू हैव एनजीटी फॉर द एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन को एनफोर्स करेबा और रिलेटेड जहां भी अछि तो इथरे देखि दियो दैट मींस एनजीटी इज मैंडेट टू मेकिंग ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन और द फाइनल जजमेंट विद इन द 6 मंथ ऑफ द तो आकु कोन टाइमलाइन दिया छै मैंडेटरी विद इन द 6 मंथ्स तो इटा कोन टाइमलाइन अछि ऑलरेडी तो ये तुमरो देखो कोठी कोठी अछि दिल्ली भोपाल पुणे कोलकाता चेन्नई सो दीज आर द एनजीटी रा सब अछि देखि दे परियो ऑब्जेक्टिव मो ऑलरेडी कहि दै छी कि डिस्पोजल करिवो केस को एक्सप्रेशन करिवो जल्दी करिवो है ना और जहां भी कंपेंसेशन रिलीफ वगैरह हे परिवो सो दिस इज ऑल अबाउट ना स्ट्रक्चर कोन तले एनजीटी रे की रहइबो जजेस पु they would be judges of what supreme court ध्यान से को again I repeat तो जो जज माने अपॉइंट होबे they must have qualification to be the judges of supreme court that's why they will be appointed by whom they would be appointed by your president obviously president ही अपॉइंट करो गवर्नमेंट के अपॉइंट करंते नहीं so it would be what appointed by the central government लिखि छी in the consultation of the CG obviously central government केमती करिवो president ही करिवो central government कोन करबे मतलब किसी ना पुट फॉरवर्ड करबे जदी सीजीआई कोन कले हां ठीक अछि दिस पर्सन इज फाइन काना हमर जानचो कोलिजियम सिस्टम अछि कोलिजियम सिस्टम रे कोनसी जज रो एलिवेशन हेगला ट्रांसफर हेगला अपॉइंटमेंट ये कोन करंती कोलिजियम सिस्टम विल रेकमेंड एंड दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एटा बाइंडिंग थाए सेहि पई तो ये जो हमर रहिछि चीफ जस्टिस कोन करबे जदी कहि देले हां ठीक अछि विद द कंसल्टेशन दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स ए कंसल्टेशन रो वर्ड रो मीनिंग को मु जाउनी काना कंसल्टेशन रो मीनिंग डिफरेंट कनोटेशन अछि तारो तो सेटा को मु जाउनी कारण सेथरे को अछि कंसल्टेशन मीन्स व्हाट let's say CGI would not agree with the name is put forward by the central government what will happen whether the central government would move ahead with that proposal no that would not be so selection committee gote रहबो selection committee central government रहबो judicial expertise रहबो majority basis रे कराचिबो जा भी हो they would be appointed है ना पावर कोन रहबे एनजीटी रो पावर कोन ना like the other courts jurisdiction हम कहबा
that is what the way to evolution of the environmental, that is what jurisprudence through the development of the alternative dispute resolution system, जोटा कि हमें एनजीटी एटा कोन कहबा alternative resolution system कहिबा, dispute resolution system भी कहि परबा, because we have to no need to go to the high court, alternative system हम पकरे अछि. लेट्स से जमी बाड़ी रिलेटेड जहाँ भी केसेस वगैरह से तापे हमें गोटे कोड कर देले, गोटे ना दे देले, दैट मींस ऑल द केसेस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज दे विल सेंड टू दैट पर्टिकुलर कोर्ट. द कोर्ट आल्सो हैविंग एक्सपर्टीज और तुरंत केस गुडा कोन हिजबो मतलब डिस्चार्ज हिजबो. तो एमती हमें गुड गवर्नेंस भी करि परबा. तो एनजीटी रो काम मध्य सया खत्म. एनजीटी कौन करे देखिबा, को एक्ट को एनफोर्स करे. ऑलरेडी मु कहि सारी छी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बगैर आसीबो नै, केना सेटा क्रिमिनल को जिवो. सेति पई तमरो देखा दैट इज व्हाट वाटर एयर फॉरेस्ट एई सब आसीबो. डन एवरीवन, दिस इज करेक्ट. Okay, these are the act. Our 80 question bane कि they will deliberately argue 1972 Wildlife Protection Act, 1960 Animal Cruelty Act, but they are not coming because these things, if you are violating 1972, 1960, that means you will send to the High Court or District Court or Supreme Court, because that is related to the criminal activities. Done everyone? Okay, so that is why they are kept out of jurisdiction. Tribal, all these things. Done. Importance वगैरह में जाओ ने कौन जजमेंट देइछि आज पण एनजीटी कौन देइछि सेटा त हमर मेंस पार्ट रो है ना. तो हम जीवानी नेक्स्ट लेसन को जीवा. हमें जस्ट अ मिनट. Now in this topic we will cover through the National Wildlife Action Plan, National Afforestation and Eco Development Board, CAMPA, Joint Forest Management. So these are the also important topics for your prelim. The CAMPA is what? Compensatory Afforestation Programs 2016. Again, this was, we will talk about that. So let's move on. National Wildlife Action Plan, Wildlife Action Plans. So first Wildlife Action Plan was released in 1983 to 2001, and the second one 2002 to 2016. That means what? How to manage, how to regulate the wildlife in India. So third action plan जति हमें देखिबा आगु, that means what? 17 to 31. So this is the third action plan is going on. So आपको किए करिबा Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This is very important. So third action plan is already going on in the nation from 2017 to the 2031. About the third action plan, action plan means what? How to control the wildlife, how to protect the wildlife, what are the problems being faced by the wildlife, what could be the probable solution for that, who would be the stakeholders, okay, the formulation of the policies, everything we will talk about. So National Wildlife Protection Action Plan is a unique, is the first time India has recognized the concern related to the climate change impact on the wildlife. This is very important. That means central government also in the concern of that the impact of the climate change is not on the human being, this is also on the wildlife, the stress on the integrating action. So that means kone stress dauchi jetebele me action plan korche with related to the wildlife action plans, they are also taking into the consideration of the climate change and its impact on the wildlife as well in the management and planning process. Because climate change does not mean it will only impact the human beings, not flora and fauna, that will all. So action plan emphasizes the impact, importance of integrated management of the coastal marine ecosystem in India whole, everything. सबू जिनसों को एथरे कोन कराउची conservation कराउची. That means there are देखा 103 conservation action and 250 projects action plan driven चालीची. Third national action plan कोन कहउची जोथरे Dr. Harshavardhan launched the Indian wildlife mobile app. This is also very important है ना. से ऑकेजन रे करथिले जोटे वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनाक्टेड हेइथिला. तो इथर पई ऐप गोटे भी रखी जंती से, बस एति की जिंस हमको दरकार. तले थर्ड एक्शन प्लान रो में की फैक्ट देखिबा, हेडेड बाय व्हाट? जेसी काला, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट. ये कमिटी को हेड करूचंती, वर्तमान दरकार ही नहीं, नेम इज नॉट नीडेड. केते बस एटा मन को 12 मेंबर कमिटी अछि. थर्ड एक्शन प्लान चाली छी,
12 member committee अछि Ministry of Environment Forest and Climate Change is the parent authority ना एथरे ताले हमें को एरिया को फोकस करबा वाइल्ड लाइफ रो हेल्थ तार कंजर्वेशन तार एथरे मारेन भी आसीबो एमते नै कि वाइल्ड लाइफ अर्थ न कि ओनली टेरिटोरियल human man and wildlife conflict है गला conservation of coastal integration of the climate change ये सब पॉइंट को मैं देखो मतलब वाइल्ड लाइफ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम फेस करूची let's say fragmentation of the forest area animal corridor everything we will talk into the or this thing will take into consideration the first time that an action plan on wildlife is recognizing that the impact of climate change on wildlife तो जहाँ भी क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट होचे ताकू नै कि हमें मैनेज करिया पे चेष्टा करिवा तार मिटिगेशन करिया पे चेष्टा करिवा दिस इज द थर्ड एक्शन प्लान बाकी बेसी किछि दरकार नै नाउ नेशनल afforestation and eco development board तो afforestation means what afforestation and reforestation so two different words when I say reforestation forest थिला खत्म हे जेछि आउथर करिवा afforestation होची न्यूली कंप्लीटली नुआ में गोटी जगह रे फॉरेस्ट को डेवलप करियो ताको होची जे afforestation and eco development board केबे असला अगस्त 1992 that means ये बोर्ड केबे असला अगस्त 1992 एथर कोन करबा प्रमोशन ऑफ afforestation tree planting करिबा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन eco development activities in the country it लिखा छै afforestation that means those area where vacant we will develop the forest in that particular region तुमको कोन पई why 1992 because of the Earth Summit Rio de Janeiro Agenda 21 that is the sustainable development and CBD भी तमरो सही टाइम रे आस्तला CBD that is conservation of the nature biodiversity तेणु करी कि conservation of nature केमिति हबो प्लस CBD टा होची legal binding treaty ध्यान से मन को CBD being legal binding treaty you have to what that is the enforce आम देश रे enforce करे पे बाध्य सेंट्रल गवर्नमेंट because once you ratified the legally binding treaty you have to implement और सेथरे नेशनल लॉ काम करिवो नै इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन विल impacted your plan and formulation सेथि पई जदि हम देखबा so we have to also adhere by the international laws and regulation that is the CBD वगैरह हम कहले or let's say CMS कहि देबो किबा साइट तमे कहि जो let's say साइट कथा भी हम हबा ये साइट भी इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइट तो ए भले ट्रीटी को एनफोर्स करे पड़ो तनु कर कि afforestation प्रोग्राम द बोर्ड तमर हैला 1992 रे जोटा कि नेशनल बोर्ड फॉर द afforestation and eco development board 1992 मन रखो ताको टिके कनेक्ट करतो रियो डी जेनेरो सहित नाउ एम्फासिस कोन स्पेशल एम्फासिस ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया लैंड कोठी ना जोठी हमर वेस्टर्न हिमालय अरावली वेस्टर्न घाट एसु एरिया रे जते फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है छी ताको रिवाइव करबा लैंड को रिवाइव करबा afforestation करबा है ना फंक्शन कोन देखबार फंक्शन से ना इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जोडी खत्म हो जाई डी डेजर्टिफिकेशन भी कहि परिवा afforestation reforestation आदर हबो कोन कम्युनिटी रे डेवलप हबो जो माने फॉरेस्ट रहउचंती सेमन को डेवलपमेंट हबो दैट मींस द ट्राइबल पीपल और द अदर आई विल से द फॉरेस्ट ड्वेलर they will also get benefit from that particular afforestation reforestation they will get employment as well so land adjoining to those area where the forest is got depleted they will again revived so that means restoration of the natural ecosystem को हमें restore करि परिबा regeneration of what fuel wood fodder ecosystem restore हे परिबो ए सब जिंस आसी जो आ ये जिंस का को मिलिबो ट्राइबल कम्युनिटी को फॉरेस्ट ड्वेलर को so that their life will enhance or that means socio-economic prosperity will again they will get back एथर कोन कोन आसु छी देखबा नेशनल afforestation प्रोग्राम कहले afforestation करा जिवो जेमति कि हमर रोड साइड रहउची ग्रीन हाईवे ग्रीन रेलवे ये सब वन टाइप ऑफ afforestation है ना देन हमें इको डेवलपमेंट फोर्सेस स्कीम तो एडे दरकार ये सब जिंस आउ बस ग्रीन हाईवे ये सब टिके मन रखिबो इंडिविजुअल बाकी तमरे देखे छी इंदिरा that is what प्रियदर्शनी विकास मित्र अवार्ड ये कौन पे दिया जाए that is what award were instituted in 1986 to recognize a pioneering and innovative contribution to made by the individual institution कौन सी ग्रुप आउ तांको दिया जाए एटा है ना कहा कोई फॉरेस्ट ऑफिसर हे परिबो अच्छा इतर फॉरेस्ट ऑफिसर माने भी अछंती नै कि जो माने बहुत भलो काम करले तांको भी मिलिबो ओके कांपा
सो कांपार मीनिंग आगे देखि दियो कांपा बहुत इंपोर्टेंट कारण सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन अनुसार ही कांपा आसला सेटा जानिया रखा दरकार इन 2002 I believe it was 2002-2004 Supreme Court of India directed the central government and asked the central government to form such kind of what that is the pool. This is a pool of money exactly जदि मु कहबी गोटे मतलब फंड ता जाको हम कहबा इज अ फंड तले कांपा कोन हम जानबा एठी कोन लिखे जे कंपेंसेटरी आफ्रेस्टेशन लेट्स से कांपार मीनिंग बुझबा लेट्स से हमें कहबे गोटे जगह रे कलिंग लेट्स से हम कहबा कलिंग स्टील प्लांट बा कलिंग नगर रे जो स्टील प्लांट वगैरह होची स्टील प्लांट जो थरे टाटा ही परे से जे भी परे किबा जिंदल ही परे जा भी परो कोनसी गोटे जते स्टील प्लांट आसेला स्टील प्लांट जेठे हमें करा जाउची जो डिमार्केटेड रीजन रे ताकू कोन करिवो फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट बैटरी हमें ट्री टा कोन फेल कर देले दैट मींस कटिंग डाउन कला तार गोटे कॉस्ट बाहर करा जिवो तार कोन कॉस्ट बाहर करा जिवो जेति की एरिया रे स्टील प्लांट होची जेति की गच्छ कटाइची से गच्छर वैल्यू बाहर करा हबो सेति की टंका कंपनी देई देबो काहू गवर्नमेंट को तार 90% पैसा रखियो स्टेट गवर्नमेंट 10% पैसा जिवो सेंट्रल गवर्नमेंट को आ से कोटा को जो स्टेट कांपा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट रो भी गोटे छै कांपा फंड तो दीटा फंड अछि दैट मींस हम कहबा 9:1 रेशियो रे कंट्रीब्यूशन रहिबो ताले तार कॉस्ट किए भरपाई करिवो से फैक्टरी तुमको सर से फैक्टरी कहीं के देबो कारण फॉरेस्ट दैट मींस नाउ विल बी फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस earlier this land was a forest land बर्तमान सेटा नॉन फॉरेस्ट में यूज होबो कंपनी पई तो दैट मींस व्हेन यू आर यूजिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस यू हैव टू कॉम्पेंसेट यू हैव टू व्हाट कॉम्पेंसेट तार वैल्यू जहाबो तको बाहर करिवो 9:1 रेशियो रे शेयर करबे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट तुमको सर से पैसा कोन हबो दैट 9:1 लेट्स से 10,000 करोड़ हे गेला दैट मींस हम कहबे सेथरु कोन करिवो 10,000 करोड़ और 9,000 करोड़ ए नै गेला 1,000 करोड़ ए नै गेला दैट मींस है ना 9,100 नै गेला तो तादरा कोन हबो कि एथरे कोन रहइबो कि जो फंड हमर गला जो पूल ए जो कांपा फंड को गला सेथर मनी डिस्चार्ज करा जिवो जेमति कांपा फंड रे थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ मनी अछि एंड ओडिशा गवर्नमेंट इज प्रोबब्ली द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ कांपा फंड कंपेंसेशन बिकॉज ऑफ द फानी जो हमर फानी हैला फानी परे कोन हैला बहुत सारा गछ भांगी गेला फानी रे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा दे देले कांपा फंड टू कि आफ्रेस्टेशन करा जो भुवनेश्वर सारा आ फॉरेस्ट रेंजर माने फॉरेस्ट ऑफिसर माने खुशी हे गेले कि थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स नाउ कमिंग इनटू द बुझ परछ नै तो सेथि पे माने जगी की बसंती फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह यार को दिन साइक्लोन हबो गछ भांगीबो हमकु टिके फंड टिके भलो आसीबो है ना जा भी हो आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल दोस ऑफिसर्स है सो कांपा फंड दैट इज हम कहबा ये होची केबे आसला 2001 रे देखो एक्जेक्टली 2001 रे आसी नथला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जोटा मु कहली 2002 2004 1 रे से समय डायरेक्ट करथिले सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यू मस्ट हैव सच काइंड ऑफ फंड फाइनली कांपा फंड आसिला केबे तो फाइनली हम देखबा शायद इट वाज 2016 एक मिनट लेट मी गो थ्रू डेट एक्जेक्टली आई एम लुकिंग फॉर द डेट मते जानला होची 2016 रे आस्थला 12 no it's not written okay as of now just remember 2016 it was date will be 2016 otherwise someone can check it ad hoc टा हितला एटा नै अच्छा 26 रे माने 2006 रे एटा ad hoc कांपा हितला बट फॉर्मली इट वाज 2016 आई बिलीव इट वाज 2016 मोर जति बने अछि कि दैट टाइम इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड द फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 2016 रे ad hoc is a different and final हम जोटा वर्तमान टा अछि 2016 अनुसार हेछि तो यार पूरा में तुमको कहितले कि केमती करा जाउछि तो फंड रोछि स्टेट गवर्नमेंट पाकर गुटे सेंट्रल गवर्नमेंट पर पूरा मेकानिज्म कांपार डिस्कस कर देले हमें डन एवरीवन है ना डन एवरीवन सो लाइक द 9:2 ये तुमको रेशियो में कहि देछि गोटे हमर स्टेट कंपनसेटरी बोर्ड अछि गोटे सेंट्रल रहिछि ओके डन एवरीवन है ना कांपा लॉ अनुसार ये सब हमें डिस्कस करते से कांपारे कोन होची को मिनिस्टर अछि देखो लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री कांपारे कोन रहिछि तमर ये फॉरेस्ट फाइनेंस प्लानिंग ये सब जको बॉडी रहिबे कांपार स्टेट भी अछि स्टेट कांपा फंड भी अछि मन रखियो है ना जति के डिस्प्लेस करियो सेति के तुम वैल्यू दे देबो कांपा फंड जोटा कहली जोटा कि हमर वैल्यू है ना कोन करियो वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू कॉल्ड द simple terms monetary value compensation that has to be deposited along with the net value of the land under the Kampa law authority who have
डाइवर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस ऑलरेडी मु कहि दिछि कि फॉरेस्ट लैंड को जेतरा हम नॉन फॉरेस्ट लैंड रे यूज करू से सेतेबेले टोटल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड फॉरेस्ट रो बाहर करके हमें कंपनसेटरी अथॉरिटी को दबा बस ए फंड रखिबे है ना। तो ये होची दैट इज आज ऑफ नाउ जदि हम देखबा यूनियन टेरिटरीज मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैज ट्रांसफर्ड कहते 47,436 crore to 27 state for the afforestation. Like a huge sum of money is been but given to the state for the afforestation. जेमती ओडिशा गवर्नमेंट होची हाईएस्ट रिसीवर एक भी मन रखो फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर हिट इन द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा। तेणु प्रत्येक वर्ष ओडिशा कौन करे डिमांड करे देखो हमको आफ्रेस्टेशन करियर अछि हमको गछ संख्या बढ़ेबार अछि हम तो साइक्लोन आसिला हमको टिके फंड रो अधिक आपन दे दियंतु दैट्स व्हाई एंड आल्सो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे आर हैविंग कोऑर्डिनेट रिलेशन। तेणु करके ये ऑब्वियसली दैट इज व्हाई कॉम्पेंसेटरी आफ्रेस्टेशन फंड रो ओडिशा को अधिक मिलुची। Now we will come to the joint forest management जाको कहजे JFM joint forest management. The joint forest अर्थ कोन joint means something somebody is added somebody is what added then who is added local people खत्म who is added local people तुमको सर local people माने आगु कोन नथिला ना it was forest department everything related to the forest will decide by whom forest department they will enforce कोठी पोखरी खोलिया रछि कोठी कोन करे अछि कोठी को गछ लागिवो एसु के डिसाइड forest officers माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आई विल से नॉट ऑफिसर डिपार्टमेंट बट एबे डिसाइड करा गला कि नहीं फॉरेस्ट जो लोकल कम्युनिटी दे आर हैविंग मोर नॉलेज देखो नॉलेज नो डाउट वी आर हैविंग बुक नॉलेज बट ग्राउंड नॉलेज दे आर हैविंग द ग्राउंड नॉलेज सो ग्राउंड नॉलेज हमें कहा करबा फॉरेस्ट ड्वेलर फ्रॉम द फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू नो फॉरेस्ट हैबिटेंट्स टू हमें कलेक्ट करिबा ओके दैट इज व्हाई प्लस एबे but they will be the part of the management of the forest. Why always forest department? Kanki forest department always all take the responsibility. Let the villagers to invite them and to be the part of the management of the forest system, and through that management process the goods and services the benefit arising from that would be equitable distribution. Let's say gote पोखरी अछि जंगल रे गोटे 10 एकर गोटे पोखरी खोला हैला सेतर हाथी मतलब हो कि बा अदर वाइल्ड लाइफ हो दे विल हैव वाटर फ्रॉम दैट कंज्यूम द वाटर ओके सेतरे माछ भी छाड़ देलो जहा बेनिफिट हैला सेठी जो कम्युनिटी अछि तांको भी किसी दबो सो दे विल हैव आल्सो शेयर दैट मींस जेएफएम रे कोन करा जाय कि बोथ द dwellers forest जो माने forested those who are dwelling in the forest region they will also get benefit plus the forest community jointly they will do तो जेमती that means they will also come forward for the protection of the forest because they will get the benefit सेति में से माने आसीबे तनु करके हम कहबा earlier that was not there earlier it was thought that only forest department is enough to conserve the forest system no then it was realized it would be better to have local communities as a stakeholder for the what natural forest management because they are having more knowledge practical knowledge in the forest or of that particular forest let's say कोनोसी गोटे region हमको गछ लगायर अछि से एरिया रे आगरो को गछ थिला हमको जणा नै but that local people they knows it better so that species selection जेतरा हम गोटे जगह रे आफ्रेस्टेशन करिवा species selection is one of the most important task otherwise गछ तो लगाई देबो से मरि जिवो किछ लाभ ही होबनी that would be wastage of money so species selection would be basis of on the basis of the local participation and that to be econo national forest policy कोन पई 33.33% we have to meet the forest area of the earth is not India of what India so that we will have sustainable development ऑलरेडी मु कहतले सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे दरकार तेणु करके आपको सेटा को हमको सैटिस्फाई करिया पड़िबो तेणु करके हमें जेएफएम आनी छै तेणु करी जेएफएम डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली डिग्रेडेड फॉरेस्ट से फॉरेस्ट और से मन केते बेले से माने काम करबे से भी किछि बेनिफिट पाया दरकार ना नले से खाली फॉरेस्ट जगिबे की विलेज कम्युनिटी माने कोन करबो इंटरेस्टेड विथ द सर्टेन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ताको कहजे तो हम ए जंगल टाको जग जंगल जगिबो जहां भी जंगल रे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट कैन यू कैन यूज तमे नहीं परियो ताको सो दैट दे विल हैप्पी दे विल हां ठीक अछि दैट मींस गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस वी विल आल्सो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ए फॉरेस्ट को हमें डाइवर्ट करे पिन दबुनु कि स्मगलिंग करूछि ताको इन्फॉर्मेशन पास करिवु गवर्नमेंट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमें प्रोटेक्ट करिवु सेथरो लैक हेगला महू हेगला जहां होछि से माने कलेक्ट करबो सो दैट वुड बी द बेस्ट वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हे परियो फॉर एग्जांपल हम देखिबा then Gujar tribe in the Himachal state prevents the widespread of the growth of the wild grass thus contributing towards the conservation of the biodiversity ये गोटे example देछि then Bishnoi community in the Rajasthan
plays a very significant role for the ecological conservation. Then तमर एठी लिखिछि Maldaris living in the vicinity of the Gir National Park. ये एमती केतेटा community दिया जो माने कि they मतलब they have done well done job or good job for the control what I would say conservation of the nature and the forest as well. ये तुमको JFM that would be enough. बाकी challenges वगैरह means perspective view कि हाँ केते अछि केते खर्च होउची जेमती लेखा होची आज पण तो 20000 पर हेक्टर दिया जाउची लटी सफिशिएंट होउची कि नाही केते फ्रीक्वेंटली हम मीटिंग करिबा कोन से माने टसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो JFM रो कोन टसल होउची तो ई भले इश्यूज को जो इश्यूज गुडा इटा एक्चुअली इश्यूज गुडा हमरो मेंस पर्सपेक्टिव रो पढा जाय तो मु इश्यूज के भी जाउनी कि इश्यूज कोन अछि फॉरेस्ट राइट एक्ट कोन क्षेत्र वायलेट होउची कि कोन से माने पाउचंती कि नाही तो बस एते कि तुमको JFM कोन जाना पड़ी गेला कि विलेज कम्युनिटी पार्टिसिपेट करिवे फॉर द कंजर्वेशन एंड afforestation programs. Now Animal Welfare Board of India एबे हमें केतेटा बोर्ड देखि दवा फटाफट Animal Welfare Board of India. So अच्छा आमे animals रो welfare कथा कोचे जेतरो that means we will talk about the Animal Cruelty Act, Prevention Cruelty Act, that is the Prevention of Cruelty Act 1960 already मु बहुत थोर कहि सारिछि तो ए एक्ट अनुसार एनिमल जेमती क्रुएल्टी न हो तले ताको कोन दरकार वेलफेयर दैट मींस इफ यू आर प्रिवेंटिंग द क्रुएल्टी caused to the animals we are talking about the welfare of that particular animals so established in 1962 under the section of prevention of animal cruelty act 1960 board केते मेंबर रहइबो 28 मेंबर्स रहइबो 3 वर्ष पई रहइबो तले एथरे के रहइबो देखि दियो that is the board was initially within the jurisdiction of the government of India, that is the Ministry of Food and Agriculture. Baki ebe tomoro kono initially it was, but in 1990 the subject to the prevention of cruelty animals transferred to the Ministry of Forest and Environment को आसी जाइछि वर्तमान तो एटा मन रखो केते मेंबर होउछि so we are having 28 members under the Ministry of Forest and Environment. Why welfare of the animal केमति होबो welfare headquarter is now Faridabad, Haryana from Chennai. Chennai रे आगरु थिला चेन्नई रु शिफ्ट हे गेला कोठी की फरीदाबाद हरियाणा तुमको कोन पई प्रॉब्लम कोन हैला बिकॉज ऑफ जालिकाटू इशू तो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज जेमति हमर तो रुक्मिणी देवी अरुंडाले was instrumental in the setting of the board तांकरी मतलब the function कोन function obviously welfare करिवो welfare केमति करिवो थाले वेलफेयर केमति करा जबो लेट्स से तांकर फूड फोडर ए सब रेस्क्यू करा जबो तांको ट्रीटमेंट दिया जबो फाइनेंशियली जेमति एठी लिखा छै तमरो कैटल मन को रेस्क्यू करिबा ग्रांट करिबा जेमति मनी क्वाडो आसीबो तांको पे शेल्टर हाउस करिबा तांको फोडर क्वाडो मिलिबो फूड क्वाडो मिलिबो नेचुरल कैलामिटी टाइम रे से मन को केमति प्रोटेक्शन दिया जबो वेलफेयर हो कोन जेते बगर हेई परिबो तमरे लेट्स से कोन गोटे एक्सीडेंट हे कि एनिमल से पड़ी छै ताको केमति रेस्क्यू करिबा ऑपरेशन करिबा एमति सब हमें एजुकेट करिवा लोक मानको को एजुकेट करिवा अबाउट द एनिमल वेलफेयर फॉर एग्जांपल हमर कोन चीफ मिनिस्टर को भी मिलितला सांको पई जो नवल पटनायक को जो पेट डॉग्स मानको पई सम व्हाट lakhs of crores of money was spent during the covid time जो डॉग ये सब गाय मानको पई भी किछि टंका हम खर्च करछन्ती ओडिसा गवर्नमेंट सेते पई भी कोन एमति गोटे अवार्ड्स मिलितला तांको मोर जहा माने पडुची एंड होप यू गाइस आल्सो अवेयर ऑफ दैट Prevention of Animal Cruelty Act 1960 कोन करा जबो unwanted inflicting unnecessary pain and suffering on the animals जानी सुन कि कोनो से गोटे एनिमल्स को जेमति जाली काटू कथा मु कहउतली जेमति रॉड ने चेंको दे दवा ता आखी रे लंका गुंड पके दवा ताको टॉर्चर करिबा तो प्रिवेंट करिया पड़ो एई भले इन्फ्लिक्टिंग ऑफ unnecessary pain suffering on the animals को हमें प्रिवेंट करिबा जदी किए करूची ताकू punishment मिलिबो obviously for that person will be punished and in the court of law रे ताको punishment दिया जिवो ना क्वेश्चन उठुतला कोन जालिकटु होची का सहित एसोसिएटेड कल्चर तेनु कल्चर आउ लॉ भितरे एबे कन्फ्लिक्ट हबो तो से इशू को मु जाउनी कारण आर्टिकल 25 रु 30 जदि नै जिवो हना दैट इज रिलेटेड टू द कल्चरल पार्ट एजुकेशन पार्ट एसो पार्ट रहिछि तो ये कोठी ना कोठी कन्फ्लिक्ट करूची तेनु कर कि सेटा गोटे फंडामेंटल राइट the fundamental right will conflict with the animal
एटा हम देखियो प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट सहित कन्फ्लिक्ट करूची बुझि परछनी तो से कन्फ्लिक्ट को तुम देखितो ऑब्वियसली तो सेथरे बैलेंस्ड अप्रोच हि नेबे सुप्रीम कोर्ट I believe also Supreme Court will go for the balanced approach. That does not means we will allow कि जालीकट्टू को allow करते हुआ सेथरे सेमते animal मान को cruelty देजो. When you are saying कि I am having fundamental rights, that your fundamental does not means to violate the fundamental right of others. That means the animal also having some sort of fundamental rights, is not it? Nobody is raising that sorts of question. Animal also having sorts of right. ठीक है तुम्हारा fundamental right to but preserve and patronize your culture. Your culture does not means कि your fundamental right does not means to violate the fundamental rights of others. तो सेटा तो ही परिबनी because they are what equal weightage. तो जहाँ भी हो सेथरे हम डिबेट को जीवन हम प्रीलिम पाई देखिबा तो एथरे देखियो कोन अछि नेशनल वेलफेयर बोर्ड एथरे हमर आसी जाउची आरी अंडर में डिस्कस कर दी फरीदाबाद को आसी जाइची कौन से लोक जदी क्रुएल्टी करूची है ना तो ताकू कोन करा जो ट्रायल करा जिवो तो एटा को टिके मान रखियो सेंट्रल जू अथॉरिटी आर्टिकल 38A डीपीएसपी रो अछि तमरो जानचियो कथा समझते है ना of the Wildlife Protection Act 1972 अच्छा ये तमरो sorry it's not sorry it's a 48 sorry it's 48A अच्छे and 48 अच्छे DPSP रे that is also talk about the animal husbandry and protection of natural environment जदि तुम देखो 48 and 48A but it is section टा मोबाइल आर्टिकल sorry it's a section 38A of Wildlife Protection Act 1972 रे कोन होची सेंट्रल जू अथॉरिटी को गोटे कहछि जोटा कि बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव बॉडी रहइबो ऑब्जेक्टिव कोन is to complement the national effort in the conservation of the wildlife को ऑब्जेक्टिव तांकर दैट मीन कंजर्वेशन केमिति हबो कोठी जूज हैला अच्छा एठी लिखा छै ना सेंट्रल जू अथॉरिटी मतलब कोठी जू हबो से जू रे कोन रहइबो जू रो केमिति मैनेजमेंट हबो प्रॉब्लम कोन जूज रो एठी जू हबो कि नहीं बस ये जू कथा ही बुझिबो खाली बस एतिक मन रखिता जू कथा ही बुझिबो कारण लेखा भी जे जू देखबा हम कोन होची तो ये जेमति देखो स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉर द हाउसिंग कहले जू रे जे हाउस रहइबो अपकीप केमिति रहइबो हेल्थ केयर केमिति रहइबो overall management in the zoo पूरा जू रा मैनेजमेंट 1992 अनुसार हो दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द जूस रूल अनुसार ताधर केते लोक रहिबो कोन सेटी टेंपरेचर केते रहइबो वाटर बॉडी अछि कि नहीं सैनिटेशन मेंटेन होछि कि नहीं ये सब मतलब जू रिलेटेड एनीथिंग दैट वुड बी सेंट्रल जू अथॉरिटी अंडर आसीबो तले मेंबर्स की चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट चेयरपर्सन 10 अदर मेंबर्स रहिबो बस सेंट्रल जू अथॉरिटी कहले जू रिलेटेड एनीथिंग बस चाहे जू रे हाउस हबो तो को प्रकार मटेरियल यूज हबो केते जण जू कीपर्स रहबा दरकार को भले तार लागिया दरकार को भले सेफ्टी रहबा दरकार है ना ये सब दिन से आसी जिवो रोल एंड फंक्शन कहतले कि जेमति फैसिलिटेटर देन द रेगुलेटर दैट मींस जे जू अथॉरिटी रो रोल हला फैसिलिटेटर देन द रेगुलेटर अर्थ कि हाउ टू हैव ए गुड जू सिस्टम इन इंडिया rather than ki control ame kam kare but facilitate adhika kariba jemti ki nandankanan zoo let's say on an average more than 10,000 people or let's say 10,000 people each day they are visiting almost like that matlab kebe mo koi ho thik hoche let's say 5k people they are visiting each day nandankanan that means ete huge amount of people visiting to tar impact kono padibo wildlife upare taku bi se dekhbhal karibo कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी कि नंदनकानन ताकू हैंडल करिया पे एतिकी विजिटर्स को ताकू से देखभाल करिवो वाटर सप्लाई ठीक ठाक अच्छी कौन सेठी सेफ्टी ठीक ठाक अच्छी विजिटर्स मान को ये सब जिंस को देखिवो ऑन एन एवरेज हम कहितले ऑन एन एवरेज हम लाइन बाय लाइन न जाई कि मु ऑन एन एवरेज कहि दउ कि जू अथॉरिटी रोल एंड फंक्शन कोन जेमति एक ता लेट्स से बाउंड्री केते एरिया हवा दरका हाइट केते रहइबो वॉल रो को प्रकार मटेरियल यूज हबो तो लेट्स से टेक्नोलॉजी कोन यूज हबो इन सिटी कंजर्वेशन रोचे ना एटा कोन सॉरी एक्सिटू सॉरी जूटा कोन एक्सिटू है ना एटा एक्सिटू तो से एक्सिटू रो किछि हम कहबा सेतिर ब्रीडिंग जोन भी करे लेट्स से नंदनकानन रे में ब्रीडिंग भी करि परिबा ब्रीडिंग भी होउची तो सेतिर बोटानिकल गार्डन भी रहउची तो जा भी हो ये सब हमें करि परिबा द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी आर कम कोन बायोडायवर्सिटी रो कथा बुझिबो ये ना रो देखुचो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी दैट मींस बायोडायवर्सिटी रिलेटेड जहां भी अछि प्रोग्राम ताकू से करिवो स्टैट्यूटरी बॉडी कारण ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर आसीबो एस्टैब्लिश के भेजला 2003 ताले कहां अंडर हबो 2002 बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली हम देखिछे बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया
सबको बायोडाइवर्सिटी आसिला कुआडू सीबीडी 1992 रियो डी जेनेरियो आसला बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन दैट मींस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जोटा कि लीगली बाइंडिंग ताकू लिंक कले 10 वर्ष पर इंडियन गवर्नमेंट निजर नेशनल लॉ बनैला बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया 2002 आरी अंडर एसबो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जी की बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जिंस को कवर करबो चेन्नई रे हेडक्वार्टर दैट मीन्स आम क्या एनफोर्स करुचे इनडायरेक्टली वी आर एनफोर्सिंग सीबीडी 1992 रेडियो अर्थ बा जेनेरियो अर्थ समिट को आम करुचे ना इंडिया रे कहीं करबा वाई इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ योर हॉटस्पॉट वी आर हैविंग प्रीटी हाई रिच बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड है ना आम पाखे 4टा हॉटस्पॉट अच्छी 2टा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट अच्छी तेणु ये सब कंजर्वेशन करियो वेस्टर्न घाट वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड ईस्टर्न हिमालय अंडमान निकोबार सुंडालैंड जहाँ तुम कौच देन व्हाट दैट इज द इंडो मलायन ये रीजन भी आम है ना तेणु बर्मा लैंड ये सब आसूची आपको आम रेगुलेट कर बायोडाइवर्सिटी एथि आमको आसूची दैट मीन्स केबे आसिला 2002 केबे बोर्ड आसिला 2003 रे कहा को एनफोर्स करूचे हम 1992 कन्वेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रेडियो अर्थ समिट को कौन पे करिया कारण इंडिया इज हैविंग 4 हॉटस्पॉट एंड 2 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी एनफ अछि इंडिया रे है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सेथि पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड पे अछि स्टेट पे अछि मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वे रे अछि ऑब्जेक्टिव कोन ऑब्जेक्टिव रेगुलेट द बायोलॉजिकल रिसोर्स इन द कंट्री है ना बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को कंजर्व करिबा एंड सस्टेनेबल यूज करिबा एमते ना कि कोन से गोटे फ्लोरा फोना मरी जाउची ताकू केमति रिवाइव करिबा फॉर एग्जांपल आई विल से चीता इज नाउ रिस्टोरेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन और दे हैव बीन रिस्टोर्ड हियर कौन पे सो दैट से जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट बायो का जो बायोटिक फॉर्म जोटा हमें लॉस्ट कर देथिले 1952 रे है ना फाइनली इट वाज लॉस्ट इन 1952 इन कैप्टिव बट वाइल्ड रे मु कहितली 1948 रे खत्म हो जाइथिला चीता तेणु करके ताकू आउथरे रिगेन करिबा और लेट्स से ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को केमती रिवाइव करिबा ता पई कने बायोडाइवर्सिटी पार्ट ये और सुंदरबन कथा तमे नहीं जाओ किंबा हमें फ्लोरा फोना कथा ओसोन रो भी नहीं जाओ ताको हमें केमती रिवाइव करिबा ये होची बायो दोटे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रो काम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आरे कोन वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम को कंट्रोल करिबो ओके ताले ये कहा अंडर आसबो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोटेक्शन करूचो ना दैट मींस समबडी इज क्राइम करूचो डूइंग क्राइम वी हैव टू कैच दैट पर्सन दैट मींस द बोर्ड इज कमिंग अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 तो इट हैज received Asia's Environmental Enforcement Award 2020 awarded by the United Nations Environment Program UNEP. That means it is doing pretty good job. Statutory body, why? Because of the Act 1972. It act under the jahar statutory body रहिबो कौन करिबो ना वाइल्ड क्राइम को कंट्रोल करिबो सो कॉम्बैट द ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड क्राइम जेमते कि पैंगोलिन को चाइना को पठा जाउची सब ए जो वज्रगति ओडिसा रो खास करी बहुत जाउची ताको एमाने कॉम्बैट करबे जेमते एयरपोर्ट रे पोर्ट रे बॉर्डर्स रे ताको सब कैप्चर करके कोन करबे दे विल एटलीस्ट एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्राइम को रिड्यूस करा जाऊ एते तांगर काम ना ताले से कोन कलेक्ट करबे इंटेलिजेंस है ना तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सब कलेक्ट करेंगे एंड टू चेक द क्राइम को चेक करने जहाँ जहाँ दरकार से काम करेंगे ये काम दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन करेंगे स्टेट पुलिस सहित बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सहित क्राइम डाटा बैंक मेंटेन करेंगे कि हाँ को माने क्राइम सहित अच्छा देन असिस्ट द फॉरेन अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तांकर भी हेल्प नेबे कैपेसिटी बिल्डिंग केमती वाइल्ड लाइफ क्राइम होची एनफोर्समेंट एजेंसी वगैरह रहिबो एडवाइस करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट को हाँ ठीक अछि ए लॉ बनांतु आपण ए भळे क्राइम होची और तापे गोटे गोटे हमको मैन पावर दियंतु जहाँ भी हो दैट मीन्स एटा तले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आसीबो साइट्स इट हैव साइट कंजर्वेशन ऑफ द नेचर सॉरी दैट इज द आईयूसीएन सेटा है ना तो एथरे कोन करा जे हमर जो इलीगल ट्रेडिंग को साइट रे कोन करा जे इलीगल ट्रेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना को एड्रेस करा जे इन द साइट ब्यूरो रीजनल ऑफिस बाकी गोटे दरकार नहीं दैट मीन्स हमको एटा कोन वाइल्ड लाइफ कंट्रोल जोटा कि ब्यूरो इज डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी फॉर द साइट रिलेटेड एनफोर्समेंट ताले साइट रे कोन करा जे ये होची इंटरनेशनल कन्वेंशन जोटा कि चेक करे वाइल्ड लाइफ क्राइम को एंड ट्रेड को इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ
इंटरनेशनल लेवल रे चेक करिया पे अछि साइट्स और नेशनल लेवल रे हमर ऑलरेडी अछि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो है ना यार काम होला तन करी साइट को कोठी ना कोठी हमें एनफोर्स करूचे थ्रू दिस ब्यूरो दैट इज द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया कोन करूची ना साइट को एनफोर्स करूची साइट कोन इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल को हमें कंट्रोल करे पे साइट रखी जाय अच्छा इफ आई से that means flora and fauna can't be internationally traded तले चीता को आनिले हमें केमती ना हमें जो चीता को आनिले but this is not trade a trade no this is rehabilitation program this is trade no जे तुम कहबो केमती site could have banned the cheetah which is now traded no this is not traded हम तो किनी केम this is for the rehabilitation program then तुम्हारा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड ये भी सेया काम करिवो जेंतो ऑपरेशन कुर्मा to save the illegal trade of the turtle तुम जानछो सॉफ्ट टर्टल ये जो कॉइन चकु सब चालान होची बांग्लादेश रू इंडिया रू चाइना को तक मारी के खाइ दउचंती तो एटा गोटे ऑपरेशन थिला ऑपरेशन कुर्मा टू चेक दैट इलीगल ट्रेड है ना ये भी ताको एमती देन ऑपरेशन टर्टल सीड दैट इज टर्टल 1 ऑपरेशन टर्टल 2 ये सब इलीगल ट्रेड ऑफ द टर्टल को चेक करिया पे देन लेट्स नो these are what ऑपरेशन सब करि चंती जो माने ऑपरेशन क्लीन आर्ट है ना ये देखो ये बहुत बढ़िया जोटा कि हमरो मंगूज पाई ये देखो मंगूज रो भी ट्रेड होतला तो ताकू कैप्चर करे अपनी ऑपरेशन क्लीन आर्ट तो एटा सेफ कुर्मा कोन पे टर्टल पाई एवडे टिके मन रखो इंटरनेशनल ए सब क्राइम सब ए सब मतलब ताकू गोटे गोटे प्रोग्राम जो हिडन ना दियंती नि की है ना सो दैट हमें चेक करिवा ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड एथरे हम कोन करिवा टू टैकल दैट इज व्हाट सास सूत सॉल made of the chiru wool तो illegal trade जोड़ा काम के ताकू खत्म करिवा ऑपरेशन that is what birbil to curb the illegal trade of the wild cat so different सारा देछि ऑपरेशन wild net 2 1 2 3 ये सब देछि आपको कोन पे देखिवा for the अच्छा एटा तुम्हारे इंटरनेट यूजिंग करी जो ट्रेड करूछंती ताकू खत्म करिया पे एटा वाइल्ड नेट है ना तो कना नेट द्वारा कोन कराउची कि ट्रेडिंग होउची सेते पे ताकू देन ऑपरेशन फ्री फ्लाई ए तो सब ना दियाची जोटा सब से माने नहीं जानती नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान दिस वन आल्सो प्रीटी न्यू बट कारण ये आगरू अछि बट ये न्यूज रे आसे नाही लेक को केमती कंजर्व करिया बिकॉज़ लेक आर द व्हाट वेटलैंड तो लेक्स मान को हम कोन कहबा वेटलैंड ऑब्वियसली वी विल से वेटलैंड कना 6 मीटर मैक्सिमम हां 6 मीटर तो वाटर थी वही थी एटा मैक्सिमम माने मिनिमम तो नहीं तो लेक को केमते रिस्टोर करिबा जेमते चिलिका हे गला और लेट्स सी योर अंगसुपा लेक हाउ टू रिस्टोर दिस लेक दोस हु गॉट एंडेंजर्ड तापे कोन करा जिवो दरकार द बेस्ट प्रैक्टिसेस लेट्स से राजस्थान गवर्नमेंट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस टू रिवाइव द लेक्स एंडेंजर्ड लेक ताको फॉलो करी ओडिसा गवर्नमेंट तो ये रहबे तुमरो लेक कंजर्वेशन प्लान एति खाली मन रखले काफी है जो आपरे सो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये बहुत इंपोर्टेंट ये तो नेशनल रिवर जन जो गंगा एज द नेशनल रिवर जल शक्ति ये भी आसे गंगा रे देन 2016 रे हम कोन कले नेशनल गंगा काउंसिल कले और जहारो हेड होची कि चेयरपर्सन देखो प्राइम मिनिस्टर सेति पे इंपोर्टेंट 2014 रे इट वाज ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जल शक्ति chairperson होची प्राइम मिनिस्टर दैट इज व्हाई दिस मेक्स द इंपोर्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी ऑलरेडी पचारि सारी छी तेनु करी ये क्वेश्चन तो हम जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये बहुत इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसीबो कने एनवायरनमेंट हमको कोन प्रोटेक्शन करे छी गंगा रे एनवायरनमेंट को चेयरपर्सन के पीएम सो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा 2016 ओके तो गंगा को केमते में क्लीन करिबा तो गंगा कहा कहा देछि उत्तराखंड यूपी बिहार झारखंड बेंगल ना 5 गंगा बेसिन अछि तादरो गंगा को थले में केमती बंचेबा को वेस्ट आसुची देखो ओपन डेफिकेशन भी सॉलिड लिक्विड सब प्रकार जते प्रकार हमें कहबा पॉल्यूटेंट अछि समस्त को कंट्रोल करिया पड़िबो सो थाउजेंड्स ऑफ क्रोर इज बीन गिवन टू रिवाइव द गंगा को रिवाइव करिया पे जेमते घाट रो रिनोवेशन करिबा जेते हमरो क्रीमेटरी ग्राउंड अछि गंगा साइड रे ताको सब इलेक्ट्रिफाई करिबा बा ताको शिफ्ट कर देबा जो डेफिकेशन होतला ओपन डेफिकेशन क्लोज टू द गंगा ताको केमते में स्टॉप करिबा
गंगा ग्राम प्रोग्राम द्वारा आम केमती हाउ टू इलेक्ट्रिफाई द ऑल द विलेजेस एंड प्रोवाइड गैस टू द विलेजेस सो दैट आम से काठ जालिबेनी बा से वेस्टेज गुड़ा को रिवर पकेबे नहीं एमती बहुत सारा प्लान अच्छी ये भितर है ना जमती तार कैचमेंट एरिया को अगमेंटेशन सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिया कैचमेंट एरिया को ट्रीटमेंट करिबा प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लड प्लेन क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस के लोक मान को गंगा विषय जनइबा कि गंगार पॉल्यूशन हेले कौन प्रॉब्लम हो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होची सो लाइक दिस है ना ताकू टिके देखिदेव तुम मैंने समस्ते सो दिस इज ऑल अबाउट देन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये दरकार नहीं किसी सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास तो बाकी हमें इंटरनेशनल